Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to discuss the study plan for CMA Foundation December 2021 attempt. So if you start preparing from today itself, then you are going to get a clear 3.5 months. आपको complete 3.5 महीना मिल रहा है prepare करने के लिए अपने foundation exam के लिए, which is much more than sufficient. तो यहाँ पर आपके पास अगस्त में 18 से लेके 31 तक टाइम है. सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर का पूरा महीना आपके पास बाकी है. सो व्हाट शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन? In the month of August, you're going to get around 12 or 13 days. So during these 13 days, you have to complete maths. In your syllabus, maths is for how many marks? 40 marks, right? Maths is for 40 marks. So you have to complete all the 3 chapters. Those are there in your maths syllabus. You have to complete all those chapters. Maths का जो 40 marks है, you have to complete that 40 marks. And after that, because law is a theoretical subject and it needs a lot of revisions, so I have scheduled law in this month. So for law, you have to complete ethics and Indian Contract Act 1872. So basically these 2 chapters carry total 70% of your law syllabus. Okay, law syllabus. So ethics is for very less pages, and Indian Contract Act will also take you a very few days, so you can easily complete these 2 chapters. And after that, eco I have scheduled in this month. Economics is for 50 marks and your management is for 50 marks. So eco का जो 50 marks है उसमें से you have to complete only 20% of your economics syllabus. As you are getting much more time to complete your syllabus and revise thoroughly, so in this study plan I'm not leaving any chapter. You have to study everything. Okay, and ये मैं इसलिए बता रही हूँ because when you complete your foundation and you come to your inter, in that case all these chapters are there also, like ethics is there, Indian Contract Act is there, Sales of Goods Act is there, your Negotiable Instrument Act is also there. So if you study here, then your burden in intermediate will be less. Okay, so this was your study plan for August. Then in the month of September, what do you need to do? You have to go for statistics, that is for 60 marks, and you have to complete it fully. Okay, 100% you have to complete in stats. After that, law में जो बाकी 30% बचा था, whatever was left in your law paper, you have to complete that much, and all these 70 marks you have to keep revising. After that, we are coming to accounts paper, financial accounting. Financial accounting में 40% आप सितंबर में complete कर लो. Okay, एंड आफ्टर दैट इको में हमने ऑलरेडी 20% किया था, और बाकी जो 30% है वो आप कंप्लीट कर लो. और साथ ही साथ आपको क्या कंप्लीट करना है? मैनेजमेंट का जो पेपर है, जो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट इज फॉर 50 मार्क्स, उसमें से यू हैव टू कंप्लीट ओनली 10 मार्क्स. ओके, ओनली हाउ मेनी मार्क्स? 10 मार्क्स. सितंबर का महीना खत्म हुआ. ये जो टारगेट्स है ना, ये सब बहुत कम है, और अगर आप ये चीज मीट कर पा रहे हो तभी आप जाकर इंटर में एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. राइट, सो ये खत्म हुआ हम लोग का सितंबर का. नेक्स्ट कमिंग टू अक्टूबर. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एज यू कैन सी, योर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर इज कंप्लीटेड टिल डेट. अगर हम लोग अक्टूबर के स्टार्टिंग की बात करें तो आपका मैथ्स पेपर कंप्लीट है, लॉ पेपर कंप्लीट है, और इको भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट है. ओनली यू हैव टू स्टडी अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट, एंड उसके साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन अ डेली बेसिस. You have to solve your law MCQ on a daily basis, and go for the revision of accounts and management after it gets completed, because your syllabus is very less. And in case of accounts also, whatever is there in your foundation syllabus, it is also there in your intermediate. So जो आपका preparation है, make it in such a way that you have to give very less effort when you will come to intermediate. Okay, as you are getting so much of time. And management का आपने 40% complete कर लिया, and accounts also you are completing the rest 60%. So in till the month of October, all your syllabus is completed 100%, fully completed, right? And in this month only you will get sufficient time to revise everything also.
So now October month is also completed. Coming to the next month and the last month, that is your November, month of November. In this month, what do you need to do? You can solve the mock test papers, the MTPs, those are being released by ICMAI. Okay. Then RTP is also released by ICMAI. Then your workbooks भी होते हैं. And then mock test क्या होता है? आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करते हैं या फिर जैसे SJC CMA इंटर के लिए कंडक्ट कराते हैं मॉक टेस्ट, वैसे ही आई एम श्योर बहुत सारी जगहों पर फाउंडेशन के लिए भी मॉक टेस्ट मिलता रहेगा. आप लोग प्लीज मेरे कम्युनिटी टैब को फॉलो कीजिए सो दैट अगर मुझे कहीं से पता चलेगा CMA फाउंडेशन के लिए मॉक टेस्ट तो मैं उसका लिंक अपने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करती रहूंगी. ओके. एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू कंप्लीट योर रिविजन ऑफ ऑल द MCQs. MCQ करना बहुत जरूरी है. एंड उसके बाद आपके पास क्योंकि बहुत टाइम है, सो यू कैन ऑल्सो स्ट्रेंथन योर वीक पॉइंट्स. जो भी आपका वीक पॉइंट होगा उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हो. जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मेरे लिए सबसे वीक था अकाउंट्स, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. तो मुझे मेरा मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स तो बहुत अच्छा था, लेकिन आई वॉज वेरी वीक इन अकाउंट्स. तो अगर मुझे इतना टाइम मिलता तो मैं डेफिनेटली अपने वीक पॉइंट को, दैट इज अकाउंट्स, उसको मैं स्ट्रॉन्ग करती. सो एज यू आर गेटिंग सो मच ऑफ टाइम, तो आप इजीली सारा कुछ अच्छी तरह से और 100% कंप्लीट कर सकते हो. राइट. सो आई होप इस वीडियो से आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा कि आपका फाउंडेशन का जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है. एंड I really hope you liked the video, and if you do, then please hit the like button, share with your CMA foundation students, and subscribe to my channel, The Witty Turtle, because as soon as you complete your foundation, you will need my channel, because I have completed the entire syllabus of CMA Intermediate Cost Accounting Paper 8. And if you have not joined my Telegram group, then the link is given in the description box below, or you can simply type The Witty Turtle on your Telegram and find my group.